Hello viewers, welcome to my channel English Made Easy with me Muskan. Today's topic is future perfect continuous tense and we will learn today what is future perfect continuous tense, its formula and examples using positive, negative and interrogative sentences. But before I go further, please do me a favor by clicking on the icon button to like, share and subscribe, so that when I post a new video, you will be the first person to receive it. So, dear viewers, in the previous video, we learned about future perfect tense and I also explained about what is future perfect tense, its a formula and examples and uses in sentences such as positive, negative and interrogative sentences, how to make it and how to use it in day-to-day life. Again, today we are going to learn about the future perfect continuous tense. Today is the one of the fourth types of future tense, and it is the last tense of future tense. And if we say combinedly, jointly, there are four tenses which are subcategories of present tense, past tense and future tense. So altogether 12 tenses, and out of 12 tenses, today is the last 12th one and fourth subcategory of future perfect tense we are going to learn. So today we will complete all the tenses and their uses. So let us focus on what is future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense also is the types of tense in which the verb forms that denote or define or describe a verb tense that describes actions that will continue or will going on up to or until a point in the future. मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा काम जो आप फ्यूचर में बताना चाहते हो कि ऐसा होगा, हो रहा होगा या कंटिन्यू होगा, तो वो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब तक कोई दूसरा पॉइंट नहीं आता है तब तक कंटिन्यू रहेगा. मूविंग फॉरवर्ड to the formula that is called general formula for future perfect continuous tense. तो उसमें भी as usual positive sentences से start करेंगे. We'll start with as for subject plus will have been plus v1 form of verb plus ing plus object. Again I repeat, subject plus will have been plus v1 plus ing plus object. What is object? Object is the remaining words in the sentence. Let us focus on how to use in a positive sentences. So future perfect continuous tense in a positive sentences, as I say, positive sentences are those sentences when we say somebody asks you a question and you can define or give answer in a yes or in a positive way. So such sentences are used to describe your opinion, your matters, that yes, this happened and it will be like this, something that is yes type of sentences. So first example we'll take is, I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. Now focusing on this first sentence, I here is a subject according to general formula. Will have been is a part of the forming the future perfect continuous tense, then plus wait
plus ing. Here wait is a V1 verb plus ing makes I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. Meaning that by the time you come, it will complete me. हम बोलते हैं ना हिंदी में कि भाई जब सपोज मैं कोई काम कर रहा होगा या काम कर रही होगी या समथिंग विल गोइंग ऑन इन द विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, बट उसका एक एक पॉइंट पे ये काम इतने बजे इतना हो गया होगा, ऐसा आप बताने की कोशिश कर रहे हो और वो बता रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक्शन जो है उसको इतना स्टेटस मिला होगा, लेवल मिला होगा या कंप्लीट हो गया होगा या चल रही होगी, ऐसी बात हो रही है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोलने की कोशिश की गई है कि आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 आवर्स बाय 6 o'clock, शाम के 6 बजे यहाँ पे मुझे वेट करते हुए 3 घंटे हो रहे होंगे। मतलब वो इंसान, वो बंदा कब से वेट कर रहा है, वो घड़ी देख रहा है कि अभी 6 बजे तो मेरे 3 घंटे हो जाएंगे, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द bus or whatever transportation that the person has taken to come back. Second, by 20, okay, by 2001, 2001, I will have been living in London for 16 years. By 2001, I will have been living in London for 16 years. Meaning that in a future, you are counting, suppose you are counting your years for how long you have been living in particular states or country or particular place, then you will say that oh अगले मंडे को तो हमको मतलब 25 साल पूरे हो रहे होंगे या हो जाएंगे। हिंदी में हम हो जाएंगे ऐसा बोलते हैं, बट जब वो ग्रामर में इंग्लिश का लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसका जो फॉर्म बदल बदल जाता है वर्ब के हिसाब से, तो उसका बोलने का तरीका भी बदल जाता है कि भाई अगले मतलब ये 2001 के एंड तक तो हमको लंदन में रहे हुए 16 साल कंप्लीट हो रहे होंगे, ऐसा मतलब है। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years. नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 4 years. मीनिंग कि भाई ये अगले साल तो मुझे यह काम करते 4 साल पूरे हो रहे होंगे या हो जाएंगे। देखो जब हिंदी में बात करते तो हो जाएंगे और लगता है वो तो कंप्लीट हो रहा है, दैट इज अ परफेक्ट टेंस। पर परफेक्ट टेंस के साथ भी कंटिन्यू, आप खत्म करके चले नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दैट प्लेस, you will be working and be completing your 4 years. That's why it is called future perfect continuous tense. Remember one thing, when you are using future perfect continuous tense, that means the action is also completing, going to complete but will be going on. जैसे कि अगर मैं यहाँ हॉस्पिटल में 4 साल काम कर रही होगी, अगले साल तक मुझे उसके 4 साल कंप्लीट तो हो गए होंगे, पर दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी ऑल्सो वर्किंग. So one action is completing but still be going on in the further future. That's the meaning of future perfect continuous tense. Like in the first example, we saw that I will have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. What does it mean? It means that 6 o'clock, very soon I'm going to round up 6 o'clock and 3 hours will be completing or will be completed. That's the perfect tense, but I will not stop waiting here. That waiting process will be going on, so that's why it is called future perfect continuous tense. In a second sentence the same apply. By 2001, people who are living in a London, I say I will have been living in London for 16 years. That means I will not stop living in a London. That means living in a London or staying in a London for 16 years will complete, that action of living will complete but still be going on in a further future. They will not vacate London city or a house in a London and come back to wherever they belong to, right? That's why it is called future perfect continuous tense. Let us start making negative sentences using the same examples with the positive sentences. Now, negative sentences.
तो पहले हमने देखा we use I will have been and then V1 and ing subject and all those things, but it's very simple. I always say that once you know how to make positive sentences, it's very easy to make negative sentences and also interrogative sentences, because positive sentences are telling you about the true fact which you are going to say, but negative is when you put not, easily it make negative. The first sentence was I will have been waiting. Now you put not between will and have, it becomes negative. How? For example, number 1, I will not have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock. पॉजिटिव में था कि मुझे यहाँ वेट करते हुए शाम के 6 बजे 3 आवर्स खत्म हो गए होंगे या खत्म होके चालू, मतलब वो काम क्रम चालू रहेगा। यहाँ पे इट विल नॉट हैपन लाइक सच एज आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग, मीनिंग दैट मुझे यहाँ पे वेट करते हुए 3 घंटे नहीं हो रहे होंगे एट 6 o'clock, दैट्स द मीनिंग। Number 2, by 2001, I will not have been not have been living in London for 16 years. That means अरे भाई 2001 में मुझे 16 साल लंदन में रहते हुए नहीं हो रहे हैं। तो what did you say? I will and then you add not between will and have. तो I will not have been living, that means मुझे यहाँ पे रहते हुए 16 साल नहीं हो रहे होंगे। थर्ड एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर I will not have been working here for 4 years. Same. अगले साल मुझे यहाँ पे काम किए हुए या करते हुए 4 साल पूरे नहीं हो रहे होंगे, ऐसा मतलब है। So guys, you see that is very easy. When you put not between will and have, it becomes automatically negative sentences, opposite of what you say in a positive sentences. Now let us make interrogative. Interrogative means how to make or say sentences or ask something in a question mode. जब आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो तो वो क्वेश्चन बोला जाता है ना कि आप हाँ भी बोलो और क्वेश्चन भी पूछो, ऐसा नहीं होता है। You must speak a question as a question and must be changed. The tone must be changed, or you must change the way of talking the or asking the question. Number 1, using the same positive sentences. Will I have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock? Meaning that क्या मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है, वो आई ऑलवेज से क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही क्वेश्चन में, नहीं तो वो क्वेश्चन दिखता नहीं है। नेगेटिव और पॉजिटिव में फुल स्टॉप लगता है। तो क्या मुझे यहाँ पे वेट करते हुए शाम के 6 बजे 3 आवर्स पूरे हो रहे होंगे, अब ये क्वेश्चन है। तो हम विल को पहले लगा देते हैं, जैसे आई विल था ना तो विल पहले हो जाएगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट, जो भी आपका प्रोनाउंस में भी आप अपने लिए बात करें तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दिस आर द प्रोनाउंस, और एनी नेम कैन बी देयर। सपोज आई से विल आई हैव बीन वेटिंग, उसकी जगह मैं अपना नाम लिखूँ या आप अपना नाम बोल सकते हो, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो। विल सेजल हैव बीन वेटिंग, आप किसी का भी नाम यूज कर सकते हो। So it doesn't matter, you only use pronoun like such as I, you, we, they, have, he, she, it. You can use any type of pronoun or name to describe future perfect continuous tense. So will I, subject is second, will I have been waiting here for 3 hours by 6 o'clock? Number 2, by 2001, comma, it will not change, the additional object or words will not change. What will change is the formula. So by 2001, will I have been living in London for 16 years is a question, so question mark would be there. Number 3, next year, will I have been working here for 4 years? क्या अगले साल मुझे यहाँ काम करते हुए 4 साल पूरे हो रहे होंगे, ऐसी बात हो रही है। तो दिस आर द इंटेरोगेटिव्स। तो डियर व्यूअर्स, दिस आर द 3 main types of sentences which we have learned through the using positive sentences and formula, and I believe
you have enjoyed this simpler way of my teaching to or telling you how to make sentences using different types of tenses. Today we have completed 12 types of tenses with the main categories: future tense, present tense, and past tense. Please refer to other videos to get knowledge of how to say things in a proper way with the proper use of sentences, examples, and formula. Because until unless you know their formation or the structure of sentences, it will be like you will be talking English, but there will be lot of grammatical mistakes. Because one thing you should remember always, that when you are talking in English, it is not for you are talking. English spoken is easy, but the same time it requires a lot of care and attention, because you are delivering or saying out something to the audience or the concerned person who is standing before you. You are trying to convey your message in English with a proper understanding. Let me put this in Hindi. जब आप बात करते हो, dear viewers, एक चीज को समझ लो कि आप अपने लिए स्पोकन नहीं कर रहे हो इंग्लिश का, राइट? आप इंग्लिश स्पोकन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अपना मैसेज जो है वो सामने वाले इंसान को या ग्रुप ऑफ पीपल को या तो जो ऑडियंस है उसको कन्वे करना है, उसको आपका मैसेज सही सोच और समझ के साथ पहुंचाना है। जब आपके सेंटेंसेस ही अच्छे नहीं है, जब आपकी वोकाबुलरी अच्छी नहीं है या ग्लोसरी जिसको बोलो कि वर्ड बिल्डिंग्स आर अच्छे नहीं है, तो आप कैसे उनको समझा पाओगे? सेंटेंसेस मैंने इसलिए पहले टेंस यहाँ पे रखा है क्योंकि जब आपको फॉर्मेशन पता चलता है, जब आपको स्ट्रक्चर पता चलता है कि भाई ये टेंस का ये स्ट्रक्चर है तो मुझे यही पैटर्न फॉलो करना है, वो कहीं पे भी जाओ यूनिवर्सली वो चेंज नहीं होगा। दैट इज वाई you have to learn first the sentences and parts of speech which are the essentials to build your grammar or build your English on it, and then always keep a dictionary with you. So to fit some extra word, कोई extra word आपको use करना है तो आप उसको नहीं समझ में आ रहा, आप अपनी लैंग्वेज में लाइए और साथ में इंग्लिश का भी ट्रांसलेट हो, ऐसा डिक्शनरी लाइए जिससे आप उसके बेनिफिट से और ज़्यादा इंग्लिश वेरी स्मूथली लर्न कर सकते हैं। Our next video, I will very soon I will put some essentials of grammar which will help you to build your grammar, not only to talk but also to make sure that you use and utilize it in a day-to-day life in a simpler way. So thank you viewers once again for watching my video, and if you have any questions or confusion, you can write on comment section and I will get back as soon as possible. Please do not forget to like, share and subscribe. Have a nice day. Bye bye.